वोट का मतलब सीखा, जनता का अब खून चूसने का ले लिया इन्होंने ठेका, जनता का अब खून चूसने का इन्होंने ले लिया ठेका। अब ना छिपाएंगे, सबको सुनाएंगे, पर्दा हटाएंगे, इनका सुनावे हाल रे कैसी It is the summer of 2001. 3 years since it last rained. We are in the Rajsamand district in Rajasthan. The government has declared this a drought-affected area. Most of the wells are dry. So are the hand pumps. This is the worst drought in 400 years. The sun plays hide and seek amongst the clouds, but even hope is not given a fair chance. There is not a blade of grass. Agriculture has long ceased to be an option, and the cattle are on the brink of starvation. But ironically for the people of this area, nature is not the biggest enemy. We visit Nimri village, one in a cluster of 10 villages under the Janawat Panchayat. A water tank stands tall in the village, but despite that, the village has no water supply, and the women have to traverse many miles to fetch a few precious pots. On closer examination, we find that the tank serves no purpose. There is no source of water either to or from the tank. The tank was constructed in 1996-97 with a sanctioned amount of 1,90,000 rupees. This is not the only anomaly here. In this vast, rugged, dry and arid landscape, we spot an oasis. This is the house of Khem Singh Solanki, a ward member of the Panchayat. He is not home, but we meet his wife, Phep Kumari. She does not face a water problem like the rest of the village. वो गांव का कुआं है, उधर आपने वो लगा रखा है पंप, और वहाँ से आप लेते हो पानी, ऐसा है क्या? पूरा मोटर? हाँ. A community well is used as the Solanki's private property. A powerful motor and underground cabling ensures uninterrupted water supply. There is enough in the storage tank to irrigate the garden that supplies the family grapes, bananas, papaya and vegetables. What is even more shocking is the fact that Phep Kumari is the beneficiary of the government's poverty alleviation schemes. आपके नाम में इंदिरा आवास में आपने लिया पैसा? हाँ लिया। तो क्या बनाया था? ये मकान बनाया था? ये मकान इंदिरा आवास में आपके नाम में था या आपके पति के नाम? मेरे नाम पे। The story of Khem Singh's misdeeds does not end here. The villagers point to an extension of his house, a hall where he runs a flour grinding mill. This, they claim, is a community center built with public funds in 1994-95 that he has appropriated. ये जो जिस कमरे में हम खड़े हैं, जहाँ चक्की लगी हुई है, ये कभी समुदाय केंद्र नहीं था? नहीं था। आपका ही अपना था? नहीं था। Meanwhile, Khem Singh arrives. He supports his wife's contention. नहीं, ये तो मेरे पहले का ही था ही मकान, समुदाय केंद्र वही है। कितने साल से समुदाय केंद्र? 6 साल, 5-6 साल हो गए। Khem Singh claims that the small structure next to his house is the community center built in 1994, a claim disputed by the villagers. पीछे जो समुदाय केंद्र है, ये छोटा वाला जो है पीला रंग का, ये कब बना? 2-3 महीने पहले बने। लेकिन ये जो है सोलंकी साहब, ये तो कहते हैं कि ये तो 5-6 साल पहले बना हुआ है। नहीं बना। आपके सामने बना है? अभी बना है 2-3 महीना पहले। The fact is that Khem Singh is lying. He has appropriated public property and hastily built another structure almost half the size of the original one to avoid scrutiny. He is now scared, for the people of the village are demanding that the accounts of public works be made transparent and the officers be held accountable. This is the demand for the right to information that gives the common man the power of public audit. अब पड़ा है हमसे पाला, हर पाप
का मुंह काला करके दे दो देश निकाला एक दिन निश्चय सफलता मिलेगी हमको। Situated in the district of Rajsamand is Devdungri, the headquarters of the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan or the MKSS. An uninformed person could easily miss it. But this is the place from where the struggle for the right to information campaign in Rajasthan began in June 1994. It was in 1990 that a few people from diverse backgrounds got together to form the organization. A member of the core team is Aruna Roy, a recipient of the MKSS award. She resigned from the elite Indian Administrative Service to work amongst the people. Being within the government, you only have the structure to work inside and with. So it's better to be outside and work. Nikhil Day gave up his studies in the USA to engage in a personal search for change. Politics of the kind that I was searching for meant participation of ordinary people in and within a democratic framework in thinking about the country. And for that I needed to come and again be part of a process where people would start thinking about their own lives, attempt to change things. It was Shankar's desire to work among his own people that brought the group to Devdungri. मुझे भी लगा कि लोगों के संगठन के बिना कुछ हो नहीं सकता. In Devdungri, the core team was joined by Lal Singh, who had left the police service, and by Chunni Singh, who had spent his early years fighting against the atrocities inflicted by the owners of the small hotels where he worked as a cook. अकेले जो काम करता था उसमें मैं फंस रहा था, पर इतना फंस के छूट रहा था, केसेस लग रहे थे, लेकिन अब मजा तो ज्यादा है कि लोग जुड़ रहे हैं, एक साथ आवाज उठी है, एक साथ आवाज उठना ही देश का खुलापन हो सकता है. Minimum wages for labour was the issue they dealt with first. Large sums of money were sanctioned by the government for development works and labour, but only a fraction reached those for whom it was meant. It was an issue linked to people's livelihood. They used to say, हमारा पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है, जलने दो उसको. But when they asked that question कि मेरा मजदूरी कहाँ गया, it became मेरी मजदूरी, मेरा पैसा. But it also became the infrastructure development in the village. It meant a talab, a road, a school building, and the location of it and the quality of it. So it joined together this question कि इस पैसे का आपने क्या किया. It's joined together the question of economics, question of livelihood, question of politics together, and it expanded the notion of one's sphere of involvement from myself to ours. मेरे पैसे से it became हमारा पैसा, हमारा हिसाब. The demand for transparency snowballed into a larger movement, and finally the Rajasthan government passed the Right to Information Act in May 2000. Photocopies of documents relating to development works can technically be obtained within 4 days. But as always, the story on paper and the ground reality are vastly different. About 65 kilometers from Devdungri towards Udaipur is Janavad. On a wall in the Panchayat building are painted details of the development works of that area for the last 6 years. A simple but powerful mechanism of transparency. Upon examination, the villagers found that the board listed works that simply did not exist. ये है जनावर से रोलेक्स रास्ता 4470. ये बिल्कुल फर्जी है, काम हो ही नहीं वहाँ, एक मुट्ठी पर मिट्टी नहीं पड़ी. On 16 February 2000, Jamna Ram Gujjar, along with other villagers, submitted the first application for copies of records relating to development works in their village. बंगला में बरामदो मैं नहीं मांगा, बरामदो में गमलो मैं नहीं मांगा, गमला में बेलड़ी मैं नहीं मांगा, मारुति गाड़ी मैं नहीं मांगा, कंटेसा कार मैं नहीं मांगा, हीरो होंडा मैं नहीं मांगा. Jamna Ram should have received copies of the documents in 4 days.
But even after relentless follow-up for 9 months, no information was forthcoming. पेप्सी कोला मैं नहीं मांगा, अरे कैंपा कोला मैं नहीं मांगा, अरे लिम्का सिमका मैं नहीं मांगा, मैंगो फ्रूटी मैं नहीं मांगा, अरे बिस्लरी मैं नहीं मांगा, बियर की बोतल मैं नहीं मांगा, दारू की थैली मैं नहीं मांगा. Undeterred, the villagers contacted the MKSS. मतलब 15 पैसे ये सिकुड़ आएगा. इनको सूचना नहीं मिली, इन्होंने MKSS के पास आया, हमारे पास भी 3-4 बार आ गए. तो हमने कहा ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, मिलना ही चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है. कलेक्टर साहब से भी बात की, CO साहब ने चिट्ठी लिख दी, देवो सूचना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर से क्या हो रहा है, क्योंकि चिट्ठियाँ सब थी. मुख्य मतलब ये पंचायत राज सचिव की चिट्ठियाँ आ गई कि सूचना दो, चारों तरफ से चिट्ठियाँ, और सब किसी ने मना नहीं किया, लेकिन दी नहीं जा रही थी. Together, the MKSS and the villagers were adamant. Finally, the Gram Sevak was assigned by the administration to photocopy the documents. He disappeared with the records and emerged 3 days later armed with a High Court stay order. पहले बताया था ना, आपको क्या चाहिए बताऊं? मस्टोड़ा की नकला मैं मांगा, मस्टोड़ा की नकला मैं मांगा, बाकी फोटो कॉपी मैं मांगा, ए बिल वाउचर मैं मांगा, पंचायत को खर्चो मैं मांगा, और लेखो जोखो मैं मांगा, विकास का रुपया मैं मांगा, इस देश का रुपया मैं मांगा, खर्चा को हिसाब मैं मांगा, बिजली को खर्चो मैं मांगा, सड़कों को खर्चो मैं मांगा, जंगल को खर्चो मैं मांगा, विकास को खर्चो मैं मांगा, ये खर्चा को हिसाब मैं मांगा, सूचना को अधिकार मैं मांगा. We decide to meet Bhuri Bai, the Sarpanch of Janavad, in whose name the application for the stay was filed. Bhuri became Sarpanch on a reserved seat. She is an illiterate, uneducated woman. She told us that she did not approach the High Court. सूचना का अधिकार जो लोगों ने मांगा है यहाँ पर, क्या आपने देने से मना किया था? तुम्हारा आपने बोले में समझ पड़े नहीं. सूचना का अधिकार मांगने आए थे आपके पास लोग. हाँ. तो क्या आपने बोला था कि नहीं देना चाहिए? वो साहब मैं तुम्हारा समझो तो कोई नहीं, बड़ी तो की ही नहीं. अगर लगे न वो खाली सचिव सरपंच का बीड़ा साहब लगाई जल्लू चु. Bhuri was made to sign on 42 blank sheets of paper that were used to deny information to the people of Janavad. But even while Bhuri gave her assent, she tried to secure her own interest. तो आपको नहीं लगा कि अगर आप खाली कागज पे दस्तखत कर रहे हो तो गलत काम कर रहे हो, गलत आपके साथ हो सकता है? लेकिन और दीदो है साहब. क्या दिया है? लेकिन दिया तमा पर क्या नहीं है, मतलब मैं करूँगा जो वेला. किसने लिख के दिया? सचिव. कि अगर कुछ होगा तो वो उस पे अपने आप पे जिम्मेदारी. हाँ साहब, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनमें. अरे राज समान जिले में जनावत काम एक बदलाया है, सेक्रेटरी सरपंच ने मिलकर जनता को बहकाया है. Finally, photocopies of the records were obtained almost 1 year after the application was first filed. Soon, campaigning began. April was fixed for a public hearing at Janavad. The villagers were urged to attend and openly testify against the fraud. The next step was to corroborate the records, a painstaking and tedious procedure. कागजों में सड़क बनाते, सब फर्जी रकम उठाते, और फर्जी शासन में नेता फर्जी भाषण अपनाते, लेखा जोखा दिखाते नहीं जनता. We witnessed the verification procedure at Mumudi, where we had found anomalies earlier. आपका नाम है और पिया भी उठाएगा. वही तो कोई नहीं पाया, वो तो किसी से वही गए. गणेश नहीं दिला. कालू राम रत्ता जी बढ़ाई अमृतिया, वो फर्जी नहीं है इधर. और भंवर जी गोमा जी बढ़ाई जनावत.
नहीं। और रत्ता जी नंदा जी बड़े अमृतिया फर्जी, कृष्णा जी नंदा जी अमृतिया फर्जी, चमना जी हिमा जी अमृतिया फर्जी। देवा जी की कहीं बलद गाड़ी लगी एक दिन काम पर नीचे आ रहा कई कियो एक तरवार से दार ने वेगी मारी एडो चोड़ावे मने कणी बात ओडावे मु कन्ना हुणु अडने तो राज रजिस्टर में मारो नाम लगे मिलियो अडने तो नाम लगे मिलियो और वडने बाणु मु बोली मारी गाड़ी बलद नहीं जा। वास्तव में आप 3 तारीख दिन जनावत गोमती चौराहे पे मीटिंग में आजो, बिल्कुल आप सरकार के सामने कहो तो बात चाली सब जो भी अभी कहने के लिए तैयार। The revelations made here are only a fraction of those that exist. The next morning we visit Janawat village. As we enter the village, we meet Shivlal, a prosperous merchant who is in the process of building himself a mansion. He is a friend of Ramlal, the erstwhile Sarpanch, in whose term these frauds have taken place. The fruits of this friendship are there for all to see. ये आपका जो घर है, मकान है, कब बनाया? ये सब ये अभी काम चालू ही है। हाँ। 2-3 साल से चल रहा है। तो इसमें तो अच्छा पैसा लग गया होगा आपका? इसमें तो 3-4 लाख रुपए लगे सर। लेकिन आपको तो इंदिरा आवास से भी पैसे मिले हैं। वो ये नहीं बनाया, उसके पहले मिले सर। लेकिन इंदिरा आवास तो गरीब लोगों के लिए होता है ना? नहीं, लेकिन वो तो होता ही है, लेकिन ये तो अब बनाया सब कर्जा लेके। वो पहले मिला था। कब मिला था? वो तो 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में आपको अमीरी आ गई? अमीरी तो नहीं आई, लेकिन बना दिया। Ramlal, the erstwhile Sarpanch, is one of the prime accused. We try contacting him, but in vain. He does not want to make himself available. At the local police station, FIRs had been lodged 3 months earlier, but no arrests have been made. In the Janawat Panchayat in village Soniana, we visit Gopi. Her home provides ample proof of her financial condition. 4 years ago, Gopi and her husband Ganesh worked as labor on a school site in their village. स्कूल पर जामिया कौन पर दो जना ये आदमी बना लगा है कोई नहीं न मैं बनी लगी कोई नहीं ये के अपने आओ को दिन काम करना न हजे दो टिकट लगा। Each evening, the two would record the day's work with markings of charcoal on the wall. There are 118 such markings, 59 for each of them. They were owed almost 7,800 rupees. और पैसा 3,000 में नहीं मिला। Efforts to get the rest of the money remained futile. Meanwhile, Ganesh died. But Gopi's hope lives on. Her hut has been plastered many times since, but the markings on the wall remain intact. In the villages of Rajasthan, hope is an overriding emotion. Meanwhile, in Janawat, more skeletons come tumbling out of the closet. The records of the village show that a health center has been built here in 1995-96 at the cost of 1,37,000 rupees. But the only one that is there has been in existence for more than 25 years, a fact that the villagers are happy to corroborate. ये आपके पीछे जो उपस्वास्थ्य केंद्र बना है, ये कब से है इधर? ये? हाँ। ये 25 साल मैंने ऐसा देखा। और हमको तो कहते हैं लोग कि इसमें बहुत सारा और पैसा लगा है, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले पैसा लगा है और बनाया है। इसमें आपने कभी बनते हुए देखा? नहीं देखा। This is one of the 4 community centers that exist on paper in this village. Our search for the others did not bear any fruit. क्या नाम है आपका? मांगेलाल गुर्जर। आपके यहाँ गुजरों की कोई सराय है यहाँ पर? नहीं सर। खरवड़ों की सराय है? नहीं। हम यहाँ पर गुजर की सराय ढूंढ रहे हैं, कोई गुजर की सराय है? गुजर की सराय कोई नहीं। यहाँ आप कोई गुजर की सराय है? कोई। कोई खरवड़ा की सराय है? कोई नहीं। Finally, the day of the Jansanwai arrives. This is the day all the preparation has been leading up to. There is an air of excitement and apprehension. This is the test. The villagers have to openly question the use and misuse of development funds in the panchayat. But they have been threatened with dire consequences. आधा आ रहे आधा नहीं भी आ रहे डर के मारे। किसका डर है? उस रामलाल सरपंच का।
सरपंच का डर है, क्या डर है? कोई बोलता है ये चला जाएगा सब जंग संघर्ष करके, और तुम कहाँ जाओगे, तुम तो यही रहने वाला, तुमको एक एक को पिटाऊंगा। तो आप आए और हम लोग बोले, तो वो बोलता है तुम हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? कौन बोला? खीम सिंह। तो फिर क्या धमकी दिया आपको? धमकी दिया कि तुम हमारे खिलाफ क्यों, वे तो 2 दिन में चला जाएगा और उसके बाद में हम ही रहेगा, हमारे गाँव में रहना पड़ेगा। वैसे करेंगे। क्या बोला, क्या धमकी दी? गाँव में रहना पड़ेगा, बाद में वो क्या करेंगे क्या बताएं। Gradually, the space begins to fill up. A panel of eminent persons, including the Chairman, Press Council of India, jurists and administrators have been invited to witness the proceedings. The sea of color sets to rest all apprehensions. आज से 25-30 साल पहले जो बिल्डिंग बनी, उसकी एमबी भरी जा रही है 98 में। एक नया पैसा पंचायत ने खर्च नहीं किया, ये पूरा गांव कहता है। रामलाल जी सरपंच के साइन है, एएन साहब के साइन है और जेएन साहब सावरचंद जी चंदेल उनके साइन है। सबसे बड़ी तारीफ की बात कि एमबी में अलग अलग फेस में एमबी भरी जाती है, तो एमबी में ये तारीख देते हैं कि मैंने इस तारीख को आके चेक किया, अस्पताल इतना ऊंचा बन गया। फिर जेएन साहब और आते हैं, फिर आके कहते हैं कि मैंने इस तारीख को चेक किया, इतना ऊंचा बन गया। और कंप्लीट एमबी इन्होंने 20/1/96 को भर दी कि ये अस्पताल बन चुका। 1,33,86,216 rupees has been spent in this panchayat over the last 6 years, and this panchayat has a voting population of 3,000. There are 9,000 panchayats in Rajasthan, over 9,000 panchayats. Half the amount of works we've examined in detail. We have examined about half the number of works in detail, worth about 65 lakhs. Out of that, today we are proving about 45 lakhs of defalcation. बावरी अमर सिंह जन्नावत के रहने वाले, उनके नाम से 8,000 रुपए इंदिरा आवास के उठे, एक पैसा भी नहीं मिला। नहीं इंदिरा आवास का आप पैसा लीधा, आप पैसा पाचो पंचायत में कराया जमा 8,000 मिला भी नहीं तो जमा क्या करा? 1,560 रुपए ब्याज का। तो आज 9/2/2000 के दिन पैसा पाचा पंचायत समिति जमा कराया इंदिरा आवास का नहीं कराया। The Jansanwai ends. The experience has been enriching. But what about the results? We pack up and head back to Delhi. ऐसा काम कराया धराला दल पे भी कहीं नहीं पाया, मवेशी अस्पताल बनवावे, 2 मंजिल पे बनवावे, अब कैसे मवेशी जावे, अब कैसे हो ये इलाज है, कैसो राजस्थान में फूफा भाई रो राज है। On the train back from Biawar, we find that the Chief Minister of Rajasthan is travelling in the same compartment. We grab the opportunity to talk to him. मुझे बहुत खुशी होगी, जो जानकारी आप देंगे हम कार्रवाई करेंगे इमीडिएटली। करप्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते राजस्थान में, ये आप रेस्ट एश्योर रहें। The response is immediate. 2 days later, we are faxed a list of action taken. वो सरपंच रुपया, सेक्रेटरी रुपया, वो जेएन रुपया, वो बीडीओ रुपया, प्रधान भी रुपया, बजरी का रुपया, आटा का रुपया, सरपंच का रुपया, एनकट का रुपया, नाटी का रुपया, रपटा का रुपया, मोरिया का रुपया, नाड़िया का रुपया, गंजा का रुपया, सड़का का रुपया, बिजली का रुपया, राशन का रुपया, गरीबा का रुपया, विकास का रुपया खाजो रे कोई तो मुंडे बोलो, विकास का रुपया खाजो रे कोई तो मुंडे बोलो, चोरीवाड़ो गाड़ा होता रे। The Janawat story may have ended on a positive note, but questions remain. Only time will tell what action was finally taken against the guilty and what departmental action translates into. But for the poor workers and peasants of Rajasthan, it's a long road ahead. गरीबी मिटावन खातर बनाई सरकार, गरीबी मिटावन खातर
बनाई सरकार, गरीबों के नाम पर खुद को भरे घर बार, अरे गरीबों के नाम पर खुद को भरे घर बार, ए धनवान ही राज चलावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चले रे, कैसे चले ओ दुनिया कैसे चले रे, दुनिया उल्टी रीत बतावे रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चले रे। मजदूरों किसाना भाइयों सुन जो देकर ज्ञान, मजदूरों किसाना भाइयों सुन जो देकर ज्ञान, तन पर कपड़ों पेट में रोटी रे बाने मकान, तन पर कपड़ों पेट में रोटी रे बाने मकान, संगला मिलकर एक को कर लो रे, सारी समझ में आवे दुनिया कैसे चले। थैंक यू।